Hello everyone, this is me Ashish Verma. Welcome to all of you on my YouTube channel Ashish Engineering. Hope everybody is doing great and living happily with their families. So यार मैं तो अभी कुछ ऐसे अपने लिए सैलेड काट रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को एक जर्नी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली जो मैंने ब्रेक लिया उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिविल बैकग्राउंड से हैं, बड़ी बड़ी इंडिया की टॉप लीडिंग फर्म्स में काम कर रहे हैं, जैसे टाटा प्रोजेक्ट्स हो गई, एल&टी कंस्ट्रक्शन हो गई, एंड एससीसी हो गई, सापूरजी पालमजी हो गई, एंड आईटीडीसी हो गई, कलपतरू हो गया। तो ये सारी टॉप प्राइवेट प्लेयर्स है जो हमारे इंडिया में, एपको, गवर्नमेंट इंडिया और जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो उनके पास 3-5 साल का एक्सपीरियंस है, 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो वो मतलब उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे लिंक्डइन में कि सर हमें गाइड करिए बेसिकली कि हम एज अ सिविल बैकग्राउंड से हमने कोर कंपनी से स्टार्ट किया, नाउ वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड वी हैव द कैपेबिलिटीज टू ड्राइव अ प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली एंड वर्क एज अ कंसल्टेंट. So how to transition from civil to consulting life? Okay, so I will not give you the complete video in this particular video basically, but I'll give you the major 3 tips which are important to switch from core private players to consulting firms like Big Four. Okay, so there are 3 things only. First thing is basically you have to be very thorough with the work, and you need to have good connection in consulting firms. I mean, you have good LinkedIn profile, you have good connection in LinkedIn, and then you are approaching people from the Big Four who are in this consulting domain from infra projects. Okay, so that will help. The second thing is whatever the expertise you bring, if you are coming from core execution, the chances are less. But if you are coming from the planning part and commercial part, or billing part, finance part, so the chances are high you can easily get switch from a core construction organization to Big Four or good top 6 to 8 consulting firms. All right. And number 3 is you have to make up your mind that now you are done with core construction companies. You have to move in consulting companies, and you have to you want to see your future in consulting, giving advices and giving like every day doing grinding and then lots of hustle and then bringing the results. All right, so that mindset you have to create. So these 3 things that you have to do in the beginning, and then in upcoming videos I'm going to give you a complete roadmap. How did I transition, and then why did I leave my current organization, like the past organization? Everything is going to come in upcoming videos, and you are going to get the complete guide. So for now, please forgive me, I have to cook my food. So till then, bye bye, take care, and see you all in my next video.